Hello everyone, good morning. This is Sudipta. Welcome to StudyIQ OPSC. So, how are you all? So, आजिर क्लास किछि रहिबो एमती आपण मानकर कंप्लेन थिला मैम 30 मिनिट क्लास रहउतिला आजिर फुल 1 आवर क्लास रहिबो. Are you all ready? So, क्लास स्टार्ट करिबा और 2 मिनिट वेट करिबा पिला तिके जॉइन कर जांतु. ओके. हाँ ठीक है. Yeah. So, let's start the class. Question number थिला 53 जाए ऑलरेडी हमें कवर अप करी थिले. कौन करथिले ना फिजिक्स हमें एनसीईआरटी कवर अप करूचे. सो टुडे सेशन इज आल्सो अबाउट द फिजिक्स. ओके जेमती एनसीईआरटी हमें कवर अप करी करी जाउचे स्टिल सेमिति करी करी जिबा. सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन होची टेल मी an object with more mass will have what less inertia जदि mass अधिक हैला then guys जदि mass अधिक रहुची तो कौन हमर लाइक कौन हबो object with more mass will have less inertia, more inertia, no inertia or constant inertia. Tell me the right answer in the comment section please. An object with more mass will have less inertia, more inertia or constant inertia. सॉरी टिके टेक्निकल ग्लिच रही जाइछि बैक हे गला पुनी तरे करिया पे टिके टाइम लागुछि. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टिके जस्ट 1 मिनिट और. So how are you all? Good morning Dinna Bandhu. CM
What is CM Chandrasekhar? Okay, so coming to the first question, answer mate diyo. What will be the right answer? That is inertia. कौन हबो? Now this is more inertia. Okay. जय जगन्नाथ चंद्रशेखर. Centimeter. Question कौन अच्छी रे? Question ता देखो. An object with more mass have more inertia, less inertia, no inertia or constant inertia. कौन हबो? जेते बेले more mass रहिबो सेते बेले more inertia रहिबो, less mass रहिले less inertia रहिबो because they are directly proportional to each other. Okay? Sound असुनी. What a minute. आसुची sound ଏବେ? Sound clear अछि कि? Next question answer दउची को मते sound clear अछि ना नहीं? So Newton's first law of motion कौन कहूची? ना about it's okay Chandrasekhar, come to the next question. Okay, Newton's first law of motion जोटा कि inertia को define करूची, an object will not change its motion unless acted on by unbalanced force or any applied force. बाहरु किछि भी force apply हेई नथिबो, still गोटे static condition रे अछि या फिर motion condition रे अछि, तार state of mass change हबोनी, they are directly proportional. Okay, next question answer दियो. A rocket moves in space because of what? Is because of the gravitational force of the earth or the magnetic force or the Newton's third law or the force of friction. Tell me the right answer in the comment section. A rocket moves in space because of yes, this is also because of the Newton's third law of motion, that every action has an equal and opposite reaction. Okay, जेमिति कि रॉकेट तले जो प्रोपेलेंट थिबो सेटा जेबले थर्स्ट हमर कोन जळिबो सेते बेले ऑपोजिट रे जळिले देन से ऑपोजिट रे कोन ऊपर को जाउची. ओके, ओडिसा प्रणाम. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो. सॉरी एटा तो तार थर्स्ट अछि कि केमती आपनकर बैकफायर हेले आगो को जाउची. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो. When a hammer strikes a nail, when a hammer strikes a nail, the nail exerts. The nail कौन हबो? A greater force, a smaller force, an equal and opposite force, or no force? Tell me. Question number 56 रा आंसर दियो कमेंट सेक्शन में. No, the right answer will be an equal and opposite force applied haba. The right answer, Chandrasekhar, is C. Gangadhar, you are right. कौन हबो ना when a hammer strikes a nail, the nail टा कौन हबो ना exert हेइसिबो. Suppose गोटे लुहार प्लेट ऊपर भी hammer बाजिला तो सेटा कोन तार सरफेस टा को एक्सपैंड करिवो. सो कोन हबो an equal and opposite force एतरे applied हबो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A force that balances another force and prevents motion is called.
A force that balances another force and prevents motion is called what? Is that contact force? Is that unbalanced force? Is that balanced force or magnetic force? Tell me. जेतेबेले गोटे फोर्स बैलेंस करूची कौन करूची ना अनदर फोर्स एंड प्रिवेंट्स मोशन गोटे अलग फोर्स को बैलेंस करूची एंड मोशन को प्रिवेंट करूची सपोज गोटे स्लाइडर अच्छी एंड सेडू गोटे बॉलटे गड़ी के आसुची एंड आमे ताकू किछि फोर्स अप्लाई करिकि ताकू गोटे जगह स्टक करूचे तो सेठी को फोर्स अप्लाई होची तो फोर्स टा ऑलवेज कोन बैलेंस्ड कंडीशन रे रहिबो इज नॉट दैट तो बैलेंस कंडीशन रे रहिले कोन हबो ना बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हैला because of force टा suppose this is a slider and इठू बॉल टा रोल हेकि आसुची एंड एई पटो जदी हमें गोटे फोर्स अप्लाई करूचे कोन करूचे ना ताकू अटकेबा पय जति की फोर्स हमें सेति के अप्लाई करिबा जदी ताठू अधिक अप्लाई करिबा ताले से कोन स्लाइडर हेले भी ऑपोजिट रे ऊपर को उठिबो राइट सो बैलेंस करिया पय जति की फोर्स दरकार सेति के हमें यूज करिबा ओके सो नेक्स्ट देखो. So what is balanced force? A force which is having the same magnitude and opposite direction. This is the physical definition. Okay. कौन रहिबो ना is balanced force. कौन रहिबो ना same magnitude रहिबो किंतु different opposite direction रहिबो because so opposite रो जो force टा apply होउची तार opposite रो ही हमें फोर्स टाको रोकिबा पे ट्राई करिबा सो ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन दियो व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स. व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फॉर एग्जांपल त माने नै परिबो कोन ना जते बेले एटा प्रीवियस वाला डायग्राम देखो जते बेले गोटे रस्सी को दि जण मिसी की टाणु चंती सेते बेले मिडिल पोर्शन ने जहा भी थिबो सपोज ए जगह रे गोटे ब्रेक हेई जिवो ताले ए जगह रे जो फोर्स टा अप्लाई हबो सेटा कोन हबो the sum of the force the net force टा कौन कहा को नेकी कैलकुलेट करा जिवो either the sum of the force the difference between the forces zero or double the larger force. No, not zero. Yes Tularam, after a long time you are here but I'm happy to see you. Good morning. So 58 question कौन हबो no this is not zero कौन हबो ना जते बेले दीटा opposite direction रे force act होउची सेते बेले हमें difference between force रे कौन अछि देखिबा suppose एपट साइड रे दीटा रस्सी टाणु चंती एपट साइड रे पूरा मोटा लोक माने मिसी टाणु चंती एपट साइड रे पतला लोक माने तो हमें difference देखिबा ना को साइड रे force केते अधिक अप्लाई होउची so always कहा को नहीं कि कैलकुलेट करिबा ना केते डिफरेंस रहउची फोर्स रो रहउची सो द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स ऊपर हम अप्लाई करिबा when two forces act in opposite directions. Just example that. Next देखो an athlete running around a circular track for running around a circular track then at constant speed गोटे constant speed रे गोटे athlete जदी circular suppose गोटे खेला पड़िया को भी example नहीं जा so जदी गोटे field रे से कोन running करूची circular path रे then कोन रहिबो in uniform motion तार मोशन कौन रहिबो ओके इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉट इन मोशन और मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन देखो ऑड आउट कर दोची बिकॉज नॉट इन मोशन तो हबनी बिकॉज रनिंग करूची माने ऑलरेडी मोशन कंडीशन रे अछि सो मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एटा भी हमरा हबनी सो व्हाट विल बी द राइट आंसर Daiditna or what's your name? I cannot read properly. What font you have used? No, Chandrasekhar, not in a uniform motion. Not in a uniform motion. Kuha? What is uniform motion? जेते बेले आमर गोटे ऑब्जेक्ट कवर करूची गोटे डिस्टेंस गोटे परफेक्ट टाइम दिया हिथिबो सपोज आमे कहितले तुमको ऑलरेडी क्लास स्टार्टिंग बेले कि जदी गोटे 5 मीटर हैला कि 10 मीटर डिस्टेंस हैला या फिर 1 किलोमीटर भी हैला जेते बेले टाइम सहित स्पीड रो कांस्टेंट हमर फिक्स्ड हे जाइथिबो सेते बेले अब यूनिफॉर्म मोशन किंतु एठी हमर कांस्टेंट स्पीड देइछि किंतु टाइम देइनी जेहेतु टाइम मेंशन नाही ताहाल हमें कोन करि परिबा ना एटा इन अ non-uniform motion. Okay guys,
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया. What is the momentum of an object of mass 10 kg moving with a velocity of 2 meter per second? तो क्वेश्चन कौन पचारी ना मोमेंटम पचारी. सो कैलकुलेट करि पाछो जदी कुह मते. सो मोमेंटम कौन कहूची phi, that is momentum is equal to mass into what velocity. so mass केते रहउची 10 रहउची, velocity केते रहउची 2 रहउची. so 10 into 2 20. right answer will be 20 kg per meter second. kg रे अछि, meter second भी अछि, यूनिट चेंज करिए भी हम दरकार नहीं. is that clear guys? formula is must and ताको मन रखिया को पड़िबो. so formula is what? momentum is mass into velocity. okay, is the product of mass and velocity. next question देखो. a car of mass, एटा नीचे मते कुआ, a car of mass 100 kg moves with a velocity of 20 meter per second. okay, unit हमारा चेंज करिबार रिक्वायरमेंट नहीं. then को what is its momentum? now tell me its your term. कुआ यार 61 आंसर मते लिखिलो कमेंट सेक्शन ने. Chandrasekhar got it. 61 answer there. In the same way. Do in the same way. A car of mass 100 kg with a velocity moves with a velocity of 20 meter per second. What is its momentum? 4000 है गला. हाँ गंगाधर 4000 है गला. सिंपल जदि तमे कैलकुलेट करिबो 1000 into 20 केते है गला 4000. sorry 40,000. this is 20,000. okay, yes, very good. next question answer दियो. so momentum रो चेंज भी जदि आपण माने देखि परिबे, चेंज इन मोमेंटम पचारथिबो ताहाले फाइनल मोमेंटम जेति कि हमर बाहरिला ताठू इनिशियल को माइनस करिवो, देन बाहरी जो हमर चेंज इन मोमेंटम. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो. work is said to be done. work is said to be done when force is applied but no displacement occur. there is a displacement but no force. force is applied and displacement occurs in the direction of force, or an object is at rest. work done is said to be done when. आउ थरे ऑप्शन गुडा को थरोली पढ़ो बुझो देन आंसर दियो. ओके, आमे 6th रु स्टार्ट करूचे यार. एनसीईआरटी आमे कोठू 6th रु स्टार्ट करूचे, जोटा कि बहुत ही इजी. सेते बेले 9 10 को जिबा मे बी टिके टफ आसी जिवो, जोटा कि तम मानकु बुझेबा दरकार पड़िबा. दिव्य मैम आपनक क्लास टाइम जानी होनी. दिव्य मोर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे फिक्स टाइम होची 11 to 12. ओके, yes. so what will be the right answer? now force is applied and displacement occurs in the direction of force. then ame kon kahiba na amara applied force is done or work is done, we can say. okay guys, C is the right answer. next dekho. the SI unit of work is, so easy peasy. answer diyo. SI unit of work is, tell me, is that watt, is that joule, is that Newton, or that erg? Sorry, the SI unit of work. yes, this is what? this is joule. okay, next question dekho. work done is negative when. work done को हमें negative केते बेले कहिबा, and question भी आसीबा work done is positive when. so work done is negative when
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन जदि सेम डायरेक्शन रे रहिला ताहाले कोन नेगेटिव कि हबो कि केबे तो हबोनी बिकॉज पॉजिटिव ही देखा जाउची क्वेश्चन सेंटेंस ता ही पढिबो जदि स्टेटमेंट ता तुमको नेगेटिव लागिबो नो डाउट तुमको ऑप्शन पढिबा दरकार भी पडिबोनी ओके सो फोर्स इज अप्लाइड बट नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन displacement is perpendicular to the force very good those are giving C as the right answer they are absolutely right and jo mane bhi B answer deicha like Tularam the right answer is C force and displacement jete bele opposite rahibo kon habo na negative habo that means jodi same re rahila kon hela positive hela okay next dekho if a person carries a bag okay ए क्वेश्चन टा गोटे एग्जांपल भाबरे ही मने रख इट्स ओके चंद्रशेखर बस आंसर दियो अदरवाइज आउ थरे रिकॉर्डिंग देखि दबा नो प्रॉब्लम ओके इफ ए पर्सन कैरीज ए बैग इन हिज हैंड एंड वर्क्स हॉरिजॉन्टली गोटे पर्सन सपोज गोटे पर्सन कौन कला ना गोटे बैग कैरी करिछि एंड गोटे सेम रूट रे से जाउछि द वर्क डन बाय हिम ऑन द बैग इज तो बैग ता ऊपर वर्क डन टा पडुछि ना तो जहाँ भी काम करुछि की करुछि पर्सन टा करुछि बट बैग ऊपर कौन तार इफेक्ट रहुछि इज दैट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और इनफाइनाइट टेल मी द राइट आंसर कौन रहिबो yes right कौन हबो ना दिस इज जीरो बिकॉज वर्क डन कहा ऊपर पडुची पर्सन ऊपर पडुची नो मैटर कि से कौन ता हाथ रे कैरी करूची सेम एग्जांपल आ गोटे आसीबो देलो ए बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी इफ आगु को आसीबो एबे नहीं ओके ए बॉडी इज सेड टू पोजेस एनर्जी इफ इट इज एट रेस्ट जदि रेस्ट रे थिबो कोन हमें ता कहि परिबा से एनर्जी पोजेस करूची इट कैन परफॉर्म वर्क जदि एनर्जी पोजेस करूची ताहाले कोन से वर्क परफॉर्म करि परिबो कंप्यूटर क्लास तुलाराम हमरो फर्स्ट रहूची साइंस टा देन ईवीएस देन कंप्यूटर सो एवरी फ्राइडे आपण माने कंप्यूटर रा क्लास पाइ परिबे ओके सो कोन रहिबो जते बेले एनर्जी पोजेस करूची इट हैज मास ओनली और इट हैज वेलोसिटी ओनली एनर्जी सहित आमे कहा को रिलेट करूछे ना वर्क को रिलेट करूछे कारण इफ यू डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनी वर्क देन यू कैन नॉट डू सो वर्क इज directly related with what the energy okay yes so what will be the right answer it can perform work next question dekho so there is two like types of energy tum padhebi but here the kinetic energy ra definition achi have a look kinetic energy is energy in motion or the energy of a moving object so जदि स्टार्टिंग रहिला कोन हबो जदि मोशन कंडीशन रे रहूची ताको हमें काइनेटिक एनर्जी कहूचे देन जदि एनर्जी कांस्टेंट रहिला ताको हमें कोन कहूचे कमेंट सेक्शन में मते जणा नेक्स्ट क्वेश्चन दियो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी is that joule is that newton is that watt or is that arc 67 question answer दिया SI यूनिट ऑफ एनर्जी को आमे कोउथिरे काउंट करूछे तार यूनिट कोन रहूची यस वेरी गुड सॉरी अर्क की कहला रे अर्क गंगाधर एनर्जी को अर्क रे ठीक अछि नाइस आंसर हां नेक्स्ट देखिबा so the right answer will be joule next chalo
So types of energies, they are thermal energy, radiant energy, light energy, chemical energy, nuclear energy, electrical energy, gravitational energy or mechanical energy. Okay? किए क्या कॉपी कर जानी पारुनी हाँ दैदीपना am I pronouncing right the name दैदीपना दैदीपना तुलारामी अलगा जोन रे तम अच्छा ना कौन गंगाधर भी so which types of energy is possessed by a stressed rubber band जेते बेले आमे गोटे rubber band को sorry this is not but एटा देखो गोटे जदी rubber band suppose this is a rubber band आमे जो ताको स्ट्रेच करू जे से केति की एते बाटा स्ट्रेच करूचे तो स्ट्रेच कला फल रे जो एनर्जी आसुची ताको आमे कोन कहूचे काइनेटिक एनर्जी देखंतु काइनेटिक एनर्जी हमरा कोन थिला जेते बेले मोशन कंडीशन रे रहउछ ताको काइनेटिक एनर्जी कहूचे हीट एनर्जी यू ऑल नो जेते हीट जनरेट होउची केमिकल एनर्जी केते बेले ओनली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेट कला बेले एनी केमिकल रिएक्शन रे हमर कोन आछि ना केमिकल एनर्जी सो ऑड वन आउट कोटा रहिला ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी ओके पोटेंशियल एनर्जी यस वेरी गुड ऑल आर राइट सो जस्ट एग्जांपल जेमति कि when compressed like कोना हमर गोटे स्प्रिंग को निया गला फॉर एन एग्जांपल गोटे स्प्रिंग को निया गला जदी कंप्रेस्ड हेकि रहउची ताको हमें कोन कहउची नॉर्मल कंडीशन टाको स्टैटिक कहउचे आ जदी एकदम कंप्रेस करि दउचे ताहाले भी तार कोन कंडीशन चेंज होउची पोजीशन चेंज होउची एंड जदे स्ट्रेस करूचे भी तार कोन होउची ना पोटेंशियल एनर्जी रे चेंज होउची ओके नो मैटर आमे ताको स्ट्रेच करूचे या फिर कंप्रेस करूचे तो तार पोटेंशियल एनर्जी रे चेंज होउची नेक्स्ट देखो the energy possessed by a moving object due to its motion is called कहिथिले एबे मूविंग ऑब्जेक्ट जो एनर्जी पोजेस करूची ताकू कोन कुआ जाउची जस्ट एबे कहिथिले को आंसर दियो give me the answer in the comment section this is question number 69 the energy possessed by a moving object due to its motion is called what is that potential energy kinetic energy chemical energy or thermal energy देखो तो thermal energy रे heat produce करूची chemical किछि reaction हमर chemical energy आसुची so odd one out दीटा अछि को कोडा राइट आंसर हबो yes this is kinetic energy next question the answer so what is kinetic energy energy of motion you can say easily this is kinetic energy the kinetic energy of a moving object depends on two things that is mass or speed and they are always directly proportional kinetic energy is proportional to mass okay next देखो the formula for kinetic energy is काइनेटिक एनर्जी जदि कैलकुलेट करके आपन मानु क्वेश्चन आसीथिबो मैथमेटिकल टिके ऑपरेशन टाइप क्वेश्चन आसीथिबो देन आपन ताको आंसर केमति करिवे ओके हाउ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज इट ke that is kinetic energy is equal to mgh or half mv square or m mass into acceleration or mass into velocity tell me yes this is kinetic energy is equal to half into mv square ओके नेक्स्ट देखो जोटा कि सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट्स possesses due to their motion so k is equal to half mv square m is for the mass b is for the velocity and k is the kinetic energy clear किछि भी क्वेश्चन आसीथिबो तुमको ऑलरेडी मास एंड वेलोसिटी गिवन देइथिबो देन पछरिबो तमरा काइनेटिक एनर्जी बाहर करिया ओके नेक्स्ट a ball is dropped from a height जदि गोटे height रू आमे ball को drop करूचे towards the earth then its kinetic energy will be maximum को time रे रहिबो starting time रे रहिबो या फिर mid रे को time रे गोटे रहिबो या फिर end time रे ऑप्शन देखंतु the highest point रे रहिबो that means starting point रे रहिबो जो टू drop हबो ball टा या फिर mid point रे रहिबो ना just before touching the ground रहिबो या फिर just after it is dropped कौन ड्रॉप हैला परे रहिबो ड्रॉप हैला परे तो तार कोन हमर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सहित किछ नाही से तो ऑलरेडी कोन स्टैटिक कंडीशन ने थिबो राइट सो हाईएस्ट पॉइंट जते बेले स्टार्ट हमें करू छे गोटे कोन काइनेटिक कंडीशन नु करू छे सॉरी स्टैटिक कंडीशन रू काइनेटिक को पुश करू छे सेते बेले कोन
बहुत पिला कंफ्यूज हेबे कि स्टार्टिंग रु ही बहुत सारा तार कोन फोर्स थाए लाइक बहुत सारा एनर्जी अप्लाइड हुए बट दैट इज नॉट द राइट वन आमर केते बेले मैक्सिमम तार एनर्जी रुहे काइनेटिक एनर्जी जिते बेले टच करूची अर्थ को जस्ट तार पूर्व ओके मन रख दैट इज व्हाट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो ए रेज्ड हैमर्स हैज जिते बेले ए रेज्ड हैमर हैज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साउंड एनर्जी और नो एनर्जी को Yes, this is potential energy. The formula is what? U is equal to mgh. Okay guys, जब हैमर टामर आसे ताको बिल्कुल भी भूल से कहबनी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ताको आमे ही निजे उठौचे एंड ताको आमे पिटिबा को पडुची सो सी रहउची कोन स्टैटिक कंडीशन रे आमे ताको अप्लाई करछ जेमति रबर को भी आमे टाणिले तो रबर तो स्टैटिक कंडीशन रे आमे ता सहित छेड़छामी करूचे राइट सो इन दैट केस आमे कोन कहि परिबा ना पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन दियो वर्क डन बाय ग्रेविटी on a freely falling object is work done by gravity on a freely falling object is what is positive negative zero or infinite देखंतु आपण कोन जीरो एंड इनफाइनाइट को साइड कर दियंतु ओके पॉजिटिव एंड नेगेटिव को गोटे रखंतु जेते बेले कोन होउची हमर सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड रहिला देन हमें कहजे पॉजिटिव जदि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हैला ताहाले हमें ता कोन कहजे नेगेटिव जदि गोटे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को हमें तळु को पकोचे ताहाले कोन तार सेम डायरेक्शन में रहिबनी की सेम फोर्स एंड सेम डायरेक्शन अप्लाई हबो तो ताहाले कोन हबो पॉजिटिव ही हबो जदि डिफरेंट डायरेक्शन में थांता अपोजिट डायरेक्शन में थांता ताहाले हमें ताको नेगेटिव कहि थांदे ओके यस this is positive next question answer diyo the energy stored in fossil fuel so fossil fuel रे हमर जो energy store हेई कि रहउची सेटा को टाइप रो energy is that thermal energy is that chemical energy is that nuclear energy or that kinetic energy देखो kinetic energy हमें कौन कहउची ना this is the energy of motion ओके न्यूक्लियर एनर्जी कोठी हबो ना न्यूक्लियर रिएक्टर केस रे दरकार हबो फॉसिल सहित यार किछि रिलेशन ही नाही केमिकल एनर्जी कोन हबो एंड थर्मल एनर्जी रे कोन कहितली ना हीट सो एनी केमिकल प्रोसेस सो जते बेले हमर फॉसिल फ्यूल ता तयारी होची इज नॉट दैट ए केमिकल प्रोसेस कोन संगे संगे लाइक कोन हमर फॉसिल फ्यूल तयारी हे जाउची कि गोटे पीरियड परे ही होची माटी तळे तार केमिकल प्रोसेसिंग चाली थाउची जोटा कि नेचुरल रहउची या फिर आर्टिफिशियल वे रे भी बना जाउची सो दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल एनर्जी ओके सो फॉसिल फ्यूल केमती फॉर्म होची ना फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय photosynthesis results of incomplete biological decomposition stored in sedimentary rock after a long period automatic से कौन ना fossil fuel ले conversion ही जाउची ओके नेक्स्ट देखिबा the work done when a person holds a bag in a stationary position is tell me कहितली गोटे एग्जांपल सेम आसीबो एंड यार आंसर मते राइटली दबा कौन अच्छी the work done when a person holds a bag in a stationary position that means in a constant position in a static position then कौन रहिबो ना work done is positive हबो negative हबो zero हबो और infinite हबो tell me already ए भले एग्जांपल आमे करि सारी छे ओके को what will be the right answer of question number 75 नो नॉट एट ऑल पॉजिटिव हबनी बिकॉज मु तुमको कहि एनी वर्क डन कहा ऊपर गोटे पर्सन ऊपर पड़िबो सी जो जिंस धरुची ता ऊपर केबे भी कोनोसी वर्क डन रो इफेक्ट पड़िबो नाही the thing or the object will not be affected by the work done applied so कौन हबो ना दिस इज जीरो
Okay, Gangadhar, this is 0. Next देखो example of work. The weightlifter holding the bar in a stationary position does no work since distance equals 0. जितेबेले से वर्क टाको कांस्टेंट रखी धरी सपोज डम्बल्स है या फिर व्हाटएवर आई डोंट नो दिस ओके दिस इज वेट लिफ्टर ओके सो जितेबेले कांस्टेंट आम किसी जिनस को होल्ड करके धरुचे जे पर्यंत ताको पर किसी फोर्स अप्लाई करने से स्टार्टिंग कंडीशन रहिला दैट मींस 0 रे रहिला ओके नेक्स्ट देखो which of the following has the highest kinetic energy tell me ऑप्शन पढ़ ता भीतर को हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कहार हम ए रनिंग कार ए स्टेशनरी बस स्टेशनरी देखो मेंशन अछि ओके दैट मीन्स ए स्टैंडिंग बस नॉट ए रनिंग बस ओके ए रॉक लाइंग ऑन द ग्राउंड दैट मीन्स ये भी हमर स्टैटिक कंडीशन रे अछि ए पैक्ड बाइसाइकिल दैट इज आल्सो इन स्टैटिक कंडीशन सो कोटा हब राइट आंसर टेल मी सो व्हाट विल बी द राइट आंसर कोटा हब काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग व्हाट इज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी Yes, this is a running car. Next question answer दियो. So तबले फ्रीक्वेंसी को तमे देखो तार कोन क्रेस्ट टाइम रे या फिर टॉप टाइम रे हमर कोन होउची ना पोटेंशियल एनर्जी हाई इन कोन काइनेटिक एनर्जी लो रहिबो एंड क्रस्ट टाइम रे कौन रहउची ना पोटेंशियल एनर्जी लो रहउची काइनेटिक एनर्जी हाई रहउची सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया पावर इज डिफाइंड एज व्हाट इज दैट वर्क डन फॉर यूनिट टाइम force applied for unit area work done for unit distance or energy consumed for unit mass tell me power is defined as work done for unit time force applied for unit area, work done per unit distance or energy consumed for unit mass. Tell me. Okay. So next question answer दिया sorry यार answer दिया go first कौन अब power is defined as work done for unit time गोटे particular time suppose 5 minutes रे तमे केति की काम करलो या फिर 10 minutes या फिर 1 hour भी हमें टाइम नउचे सो 1 hour रे केति की काम करलो सेटा डिपेंड करे कहा ऊपर ना केति की वर्क तमे करलो केति की फिक्स टाइम रे सो दैट्स डिपेंड अपॉन वर्क डन पर यूनिट टाइम power is what na electrical power katha kochi okay electrical power is defined as the product of voltage and current that is p is equal to v into I if question ne tamara asila ki power या फिर current बाहर करिया पई then easily जदी mention थिबो दीटा then गोटे काढी दबो so next what the SI unit of power is the SI unit of power is tell me the SI unit of power is what? Joule, watt, Newton or arc? Yes, so right answer कौन हबो ना what हबो SI unit of power yes very good arc seriously next चलो देखो so units of power कौन कौन रही पारे definition हम देखि दियो power measures the rate of energy transfer of the rate at which work is done देखि देले time and work is कौन directly proportional so units
watt, kilowatt, megawatt, gigawatt, terawatt, and the horsepower, metric horsepower, British thermal unit for hour, and foot pound for minute, joule per second. These all are the units of what? Power. Okay. Next देखो, the rate of doing work is called. The rate of doing work is called what? Is that energy, is that power, or that force, or that momentum? Rate of doing work. Okay. आमे ऑलरेडी पढ़ुचे कहा विषय रे? पावर विषय रे. सो भाभी चिंती के आंसर दियो मते. Rate of doing work. टिके टिके सिली सिली मिस्टेक भी भूल है जीवो. ओके चंद्रशेखर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. ओके. But capacity of doing work, देखो rate of doing work is different, but capacity of doing work is different. जदि capacity पचारिला, then आमे कहिबे energy. Capacity आमे कोउठु पाउछे? ना capacity of doing work. That is energy. Okay? Next, power. Definition कौन कहूची? The time rate of doing work or the time rate transfer of energy is what? Power. So power is equal to what? Work by time. Okay, work by time. Next, the commercial unit of energy is. Tell me the commercial unit of energy is. Joule, arc, kilometer hour, sorry, kilowatt hour or what? कही एबे कौन हम एनर्जी को डायरेक्टली कहा सहित रिलेट होउची? टेल मी 80 क्वेश्चन नंबर आंसर दियो. द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज. यस, दिस इज व्हाट? दिस इज किलोवाट आवर रे हमें कौन ना काउंट करूचे कमर्शियल यूनिट को. ओके, केते किलोवाट तमे कंज्यूम कलो से अकॉर्डिंग तमे पेमेंट करूछो. Okay. Next, so the first definition देखिए, the commercial unit of energy is the kilowatt hour, which represents the amount of energy consumed by a device working at a constant rate of 1 kilowatt for 1 hour. Main thing होजी 1 kilowatt for 1 hour is the key. Okay. Next, which of the following is an example of work being done? This is also definition of something else. Which of the following is an example of work being done? The options are a person pushing a wall but failing to move it, a satellite moving in a circular orbit. देखो circular orbit जो satellite बुलुची सेटा already done है ही नहीं, so work is going on. Done means हमें कौन परफेक्ट को ही बुझीबा. ओके, या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को बुझीबा, नॉट ओनली प्रोग्रेसिव. सो ए पर्सन पुशिंग ए वॉल बट फेलिंग टू मूव इट, तो एटा किछि हेलानी माने फेलुअर हेला, एटा ऑलरेडी काम चली छी. ए बुक फॉलिंग ऑफ ए टेबल कौन पड़ुछि एट द मोमेंट केते बेले भी पड़ी पारे. एंड आमे जानिछे गोटे स्पीड रे आसुची सैटेलाइट कोन बुलुची माने ऑलरेडी बुलुथु, आमे जाने केते फ्यूल अछि केते टाइम बुलिबो, बट तले बहिटा पड़िबो गोटे टाइम विद इन 10 सेकंड, विद इन 1 सेकंड, बट से सरफेस को टचिंग करिवो. दैट वी नो, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ. सो ए बुक फॉलिंग ऑफ ए टेबल इज द एग्जांपल वेयर वी कैन से दैट द वर्क ऑलरेडी डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If the velocity of an object is doubled, if the velocity of an object is doubled, its kinetic energy becomes. If the velocity of an object is doubled, its kinetic energy
is कौन हबो हाफ हबो डबल हबो 4 टाइम्स हबो और नो चेंज हबो कुह मते if the velocity of an object is doubled its kinetic energy becomes what it becomes to half it becomes to double it becomes to 4 times or no sense डबल नहीं एकाथरे आहुरी डबल फोर्थ टाइम ही हे जिवो बुझिलो केते हबो ना फोर्थ टाइम हे जिवो कोन हबो ना काइनेटिक एनर्जी रो देखो हाउ what is the velocity now the velocity of an object is defined as the displacement for unit time in a particular direction गोटे particular direction रे हमर displacement केति की रहउची that depends upon the what हमर velocity so the symbol used to represent velocity is v that is small v okay velocity is equal to एटा माने रखो v is equal to what ना d by t okay next चलो work done by a force is maximum when the angle between force and displacement is tell me work done by a force is maximum when the angle between force and displacement is what is 0 degree is 30 degree 90 degree or 180 degree maximum केते बेला हबो work done बिकॉज गोटे पिक को आसिकी सब बेले वर्क टा कंप्लीट हुए आमे ताकू कहे जो टाइम रे पिक रे छुए सपोज कोन कहूची वर्क डन बाय ए फोर्स इज मैक्सिमम कहिची सो मैक्सिमम केबे हबो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट केबे हबो जोटा आपण भाबुथि सबठु अधिक ना सबठु अधिकटा नाही कंफ्यूज हबनी दिस इज 0 डिग्री 0 डिग्री रे हमर रहिबो कोन ना एंगल ऑफ लाइक बिटवीन फोर्स एंड द displacement amara sabutu maximum rahibo okay look work is equal to force into displacement okay so when force and displacement are different direction only the component of force in the direction of kana in the direction of d matters ठीक अछि so jete bele work ta amara complete हेबा को जाउची and peak ऊपर अछि सेते बेले कोन ना 0 हबो because amara highest peak को छुइला परे कामटा बंद हे जाय नेक्स्ट कहूचे ना सपोज गोटे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पड़ुची तलू तो केते बेले जस्ट पड़िबा पूर्वरु ही मैक्सिमम रहउची तार फोर्स टा राइट व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन which form of energy is produced by the sun is that chemical energy is that nuclear energy is that mechanical energy or that is kinetic energy tell me yes so जते बेले कोन आसुची ना which form of energy sun कथा आसिला आमे जानिबा कोन ना तारो न्यूक्लियर रिएक्शन विषय रे जानिबा so कोटा हबो ना दिस इज न्यूक्लियर एनर्जी ओके आर्टिकल 21A such a nice article you have already carried out but OSSC CGL रा मेंस देई जंदी प्रीलिम क्लियर करि जंदी मेंस दियो देन मो संगे कथा हो ठीक अछि नो वरीज डोंट बी पर्सनल ओके जस्ट ए आंसर ऑफ योर क्वेश्चन दैट्स इट so which form of energy is produced by the sun this is nuclear energy and chemical energy repeat again chemical process रे chemical reaction रे जो energy release होउची या फिर require होउची that we can count as a chemical energy okay mechanical energy that is गुट convert होउची machine रू machine को energy electric रू machine को जते बेले generate होउची जेमिति कि हमें generator यूज करूचे current देला परे okay तापर कोन होउची mechanical energy रे convert हो जाउची electrical energy टा okay next देखो so sun रे कोन होउची ना न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्ट होउची नेक्स्ट
ए स्ट्रेस्ड बो has ए स्ट्रेस्ड बो जिते बेले आमे गोटे धनुष को मारुचे तार तीरटा आगु जीवा पई ताको आमे कोन स्ट्रेस करूचे पछकू सो सेटा कोन हबो रबर स्ट्रेस सहित ताको इक्वल करिकी काउंट कर कौन हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी एनीथिंग वी कैन स्ट्रेस and that is traceable then सेटा कौन हम ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी always keep that in your mind okay very good next the law of conservation of energy what the law of conservation of energy states that tell me the law of conservation of energy states that energy can be created but not destroyed. Energy can be destroyed but not created. Energy cannot be created nor be destroyed. That is only can be transferable or energy disappears after use. Kon haba? Yes, according to the what conservation of law of conservation of energy or you can say conservation of energy law. कौन हबो ना एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड दिस कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओके नेक्स्ट so law of conservation energy the law of conservation energy states that the energy can change forms but neither created nor destroyed that is what this is the formula गोटे फॉर्म रु डिफरेंट फॉर्म को बस ट्रांसफर हो पार ओके बट इन क्लासिकल मेकानिक्स द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम्स रिमेन्स कंस्टांट एटा भी मन रखी था कोथिरे ना मॉडर्न फिजिक्स रे कोन दोची एंड क्लासिकल मेकानिक्स रे कोन अछि नेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हाट हैपेंस to the potential energy of a falling object is that it increases, it decreases, it remains constant or it changes into sound energy. Okay. कौन हबो what happens to the potential energy of a falling object धीरे धीरे कौन हबो पोटेंशियल एनर्जी कथा पचारिची बट काइनेटिक एनर्जी कौन होची फास्ट होची जदि काइनेटिक एनर्जी जोठी बढ़ुची तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी टा कमी जीवो बिकॉज़ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी गुड नेक्स्ट सो thus it can be concluded that kinetic energy of a freely falling object on reaching the ground is nothing but the transformation of its initial potential energy so potential energy before touching the surface कौन हम धीरे धीरे डिक्रीज हो and after touching this is zero next one the power of a machine that does 1000 joule of work what 1000 joule of work in 2 seconds is kuha power of formula we know that is what work power is what guys power is nothing but the work by time so work केते अछि 1000 of joule यूनिट चेंज करबा दरकार नहीं जूल एंड सेकंड ठीक अछि by 2 कटा छटा केते हैला 500 हाँ हाँ सब तो डबल मल्टीप्लाई हो जाउची ना कि गंगाधर सब खाली मल्टीप्लाई करो किछि भी हाँ दिस इज 500 वाट ओके नेक्स्ट कमेंट डिलीट कले कौन हम मुझे पढ़ी छी ना नेक्स्ट देख ए विंड टर्बाइन कन्वर्ट्स what is that kinetic energy to electrical energy or chemical energy to heat energy or mechanical energy to light energy or thermal energy to sound energy कहला मते एटा देखिबा टिके केते रहउची तमरा कॉमन सेंस एटा भी देखिबा चेक करिबा
अरे वाह चंद्रशेखर तुम क्लास रे अच्छो एबे जाए आई थॉट यू ओके सो वाइंड टर्बाइन्स कथा कौन कहला ना कन्वर्ट होउची हमरे टर्बाइन्स रे कोन जदि वाइंड कथा पचारि ओके फॉर द पर्पस ऑफ वाइंड देन हमर कोन होउची ना काइनेटिक एनर्जी बिकॉज़ वाइंड ता हमर कोन होउची बुलुची टर्बाइन ता घुरी रहउची ना सो काइनेटिक एनर्जी को कोथरे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूची हम टर्बाइन थ्रू रे सो काइनेटिक एनर्जी ता इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करूची क्लियर यस वेरी गुड काइनेटिक टू इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट this is the whole mechanics you can have a look what happens to the kinetic energy of an object if its mass is doubled again कहूची भलो से मने रख पढ़ what happens to the kinetic energy of an object if its mass is doubled but no velocity remains constant sorry but velocity remains constant को जति velocity कन्स्टांट रखिकी आम तार काइनेटिक एनर्जी को सडन डबल करदेबा देन कौन हम रिमेन्स सेम रहिबो ओके कौन रहिबो ना काइनेटिक एनर्जी सेम रहिबो डबल हे जिवो और बिकम हाफ हे जिवो और कौन क्वाड्रप्स हे जिवो what happens to the kinetic energy if of an object if its mass is double करा गला मास को जदि काइनेटिक एनर्जी किसी गोटे ऑब्जेक्ट कंटेन करूची ताको डबल करा गला देन कौन हबो मते कुह तार वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट जदि रखी की कले दिस इज आल्सो बिकम डबल हाँ हाँ सेम तो रहिबो चंद्रशेखर हाँ हाँ पूरा सेम रहिबो एग्जाम रे एटा लिखि दे के आसीबो हला पूरा सेम मार्क भी तुमको पाइबो डोंट वरी जेमिति लेखिबो सेमति आंसर पाइबो सो आज पे एतिकी रखिबा नेक्स्ट क्लास रे आउ देखिबा व्हाट से थैंक यू सो मच गाइस एतिकी रे हम रखिबा क्लास एंड करिबा नेक्स्ट क्लास पुणी अच्छी हमर ईवीएस उपरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहिबो किछि नाही सबुतिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मानुची बिकॉज आम एनसीईआरटी कवर अप करके जाउछे बोथ ईवीएस एंड हमर फिजिक्स भी फिजिक्स क्लास कवर हो जिवो ट्राई करछु बहुत आज तो काफी क्वेश्चन हमें कर देले ना तो धीरे धीरे आउ टिके स्पीड करके एटलीस्ट 1 आवर रे हमें 50 एबव ट्राई करबा पई सो वंस एनसीईआरटी कवर अप हो गले देन केमिस्ट्री भी देखिबा देन बायो को भी देखिबा बट ईवीएस चालुची ता साइड भी देखिबा बट एनी हाउ जदी ईवीएस भी जल्दी सरी गला देन हम ईवीएस क्लास रे भी ऐड कर देबा ठीक अछि बायो ऐड कर देबा बेटर हम थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर ऑल योर अटेंशन